Serum creatinine basically biochemical measurements of concentration of creatinine in serum or in urine, or basically a assessment method of total body muscle mass for person with normal renal function. Basically, muscle mass is a reflection of proper protein nutrition. नाइट्रोजन बैलेंस इज वन ऑफ द बायोकेमिकल मेजरमेंट्स है बेसिकली। इसमें हम लोग कंपेयर करते हैं अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज कंज्यूम विद द अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन इज एक्सक्रीटेड इन अ गिवन पीरियड ऑफ टाइम। इसमें जीरो नाइट्रोजन बैलेंस और पॉजिटिव नाइट्रोजन एंड नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस। In case if nitrogen intake is more, then we defined as a positive nitrogen balance। ये किन सिचुएशन में होता है कि टिश्यू ग्रोथ है और ड्यूरिंग रिकवरी फ्रॉम एनी इलनेस। इन केसेस में इन सिचुएशंस में पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस। in case अगर nitrogen loss is greater than intake, then we define as a negative nitrogen balance। इसमें मेन रीजन है अगर प्रोटीन का इंटेक कम है, उसमें स्ट्रेस है, कोई भी बर्न्स है, इलनेस है, इंजरी है। पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस में है कि रिकवर हो रहा है पर्सन इलनेस से, लेकिन ड्यूरिंग सर्जरी हुई है, कोई भी इलनेस है, अभी रिकवरी उसकी स्टार्ट नहीं हुई, उसमें हम कहते हैं कि ये नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस है। अगर बैलेंस होगा, अमाउंट ऑफ नाइट्रोजन कंज्यूम है, उतनी ही अमाउंट में नाइट्रोजन का लॉस हो रहा है, इसको हम कहते हैं कि ये नॉर्मल नाइट्रोजन बैलेंस है। आपको दोनों पता होने चाहिए कि पॉजिटिव नाइट्रोजन बैलेंस, नेगेटिव नाइट्रोजन बैलेंस और नाइट्रोजन बैलेंस इन नॉर्मल ब्लड केमिस्ट्री, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको इलेक्ट्रोलाइट्स, ग्लूकोज, एलएफटीज, लिपिड प्रोफाइल एंड कंप्लीट ब्लड काउंट, इसमें आरएफटीज में बेसिकली ब्लड यूरिया नाइट्रोजन एंड क्रेटिनिन, इनकी लाइक ये टू टेस्ट है। अगर किसी के भी पर्सन का हमने रेनल फंक्शन टेस्ट है, उनकी रेनल फंक्शनिंग को चेक करना है, तो उसमें हम ये टेस्ट करवाते हैं। Physical examination performed by medical or nursing staff. The dietitian should perform a nutrition-focused physical examination, and the purpose of this examination is to assess the patient for signs and symptoms that are related to malnutrition or specific nutrient deficiencies. Clinical or physical examination, clinical methods for assessing nutritional status and checking signs of deficiency at specific places on the body, sometimes asking the patient whether they have any symptoms that might suggest nutrient deficiency from the patient. Clinical signs of nutrient deficiencies include pallor, skin or edema, goiter, and severe visible wasting। इन केस अगर मेल न्यूट्रिशन है, उसमें साइंस यूजली अपीयर होंगे, जैसे हेयर है, स्किन है और डाइजेस्टिव ट्रैक है, जिसमें माउथ, टंग है। समटाइम क्लिनिकल साइंस ऑफ न्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी की वजह से होते हैं। और फिजिकल इंडिकेटर्स ऑफ न्यूट्रिशनल स्टेटस, इसमें हेड टू नेक, जिसमें हेयर, फेस, आईज, लिप्स, टंग, टीथ एंड गम्स हैं। हेयर में बेसिकली साइंस ऑफ गुड न्यूट्रिशन में शाइनी हो, न्यूट्रिशन में डल, ड्राई, थिन, रफ है। ब्राइट, क्लियर। eyes, signs of good nutrition में bright, clear, pink membrane, adjust easily to light। In signs of malnutrition में pale membrane, dryness, night blindness, redness at corners of eyes। In lips, signs of good nutrition में smooth होंगे, pink है और dry, crack, sores in the corner of the lips। ये signs of malnutrition है। इसमें lesions हो सकती हैं, red हो सकती हैं।
In mouth, that is including tongue, teeth, and gums. Basically, gums smooth, non-bleeding, swelling और पेन नहीं होगी इसमें. In teeth में basically non-missing, non-overlap, without cavities, tongue deep, red, slightly rough surface, or normally sensitive taste. ये basically signs of good nutrition है. साइंस ऑफ malnutrition में टंग स्मूथ होगी, डिक्रीज टेस्ट सेंसेशन और ब्लीडिंग गम्स, स्पॉन्जी होंगे गम्स, इन्फ्लेमेशन होगी, अगर टीथ है बेसिकली कैविटीज हैं, ग्रे स्पॉट हो सकते हैं और एरप्टिंग एबनॉर्मली और मिसिंग होंगे. Signs of good nutrition in skin, moist, smooth, और signs of malnutrition में dry है, scaling है, और no fat layer under skin है, bruises है. ये basically signs of good poor nutrition है और malnutrition है. Poor wound healing है, rough होगी, और इन केस अगर ब्रूजिंग है, ब्लीडिंग अंडर स्किन है, वो विटामिन सी एंड के की डेफिशिएंसी हो सकती है. Pink nail beds, smooth, flexible, and uniform shape. These are the signs of good nutrition. And brittle, rigid, pale nail beds or spoon shape. These are the signs of malnutrition. Normal pulse rate or normal blood pressure, these are the signs of good nutrition in cardiovascular, or like abnormal rhythms है, blood pressure elevated है, mental confusion है, edema है, और these are the signs of malnutrition. Common clinical signs of micronutrient deficiency: calcium, magnesium, selenium, zinc, folic acid, beta carotene, B6, B12, and E. In calcium, rickets, fractures, muscle spasm; magnesium, arrhythmias, seizures, dizziness, weakness; in zinc, loss of taste. In case of folic acid deficiency, increased risk of neural tube defect, elevated homocysteine level, and anemia. In vitamin C deficiency, scurvy, appetite suppressed appetite, digestion problem, or slower healing of cuts, poor wound healing. Low red blood cell count, low white blood cell count, poor appetite or reduced strength, hair loss, elevated homocysteine level in B6 deficiency. Rickets, risk of fractures are increases, low bone density and weak bones in case of vitamin D deficiency. Goiter in case of iodine deficiency, tetany, calcium, potassium, sodium deficiency, slow clotting time of blood in vitamin K deficiency, or dermatitis, diarrhea in case of niacin deficiency. In case of the linoleic acid deficiency, eczema or glossitis in folic acid deficiency. Hydration state, fluid retention or dehydration may be due to any illness or use of certain medication, like in dehydration or fluid retention में two factors हैं. One is कि अगर कोई भी ऐसी certain medication का use है या किसी disease की वजह से. Fluid retention other name इसका edema है. मेन इसकी कॉजेज या रीजन जिसकी वजह से एडिमा होता है, इसमें ब्लड वेसल्स, किडनी, लिवर और हार्ट अगर इनकी मेल फंक्शनिंग है, इसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी. अब इसके अगर फिजिकल साइंस है, बेसिकली इसमें वेट गेन और स्वेलिंग ऑफ लिम्स है, टाइट फिटिंग शूज. इन डिहाइड्रेशन, डायरिया, स्वेटिंग, फीवर, excessive urination और स्किन इंजरीज है,
जिसकी वजह से फ्लूइड का लॉस हो रहा है। ये मेन कॉजेज है डिहाइड्रेशन की। लाइक फ्लूइड रिटेंशन की, जैसे उनके साइंस एक्सप्लेन किए हैं आपको। अब इसमें ड्राई स्किन होगी, ड्राई माउथ होगा, अगर यूरिन है वो डार्क कलर का होगा, और इसका वॉल्यूम लो होगा। ये बेसिकली साइंस हैं डिहाइड्रेशन के। हाइड्रेशन से 2 पॉइंट्स उसमें फ्लूइड रिटेंशन एंड डिहाइड्रेशन है। बेसिकली फ्लूइड रिटेंशन में इसकी मेन रीजन या इसमें किडनी, लिवर, ब्लड वेसल्स अगर इनके फंक्शन कंप्रोमाइज्ड है, उसकी वजह से फ्लूइड रिटेंशन होगी। और इसके साइंस में वेट गेन है, स्वेलिंग ऑफ लिम्स है। इन केस डिहाइड्रेशन है, उसकी मेन रीजन डायरिया, स्वेटिंग, हॉट वेदर, कोई स्किन इंजरी है, या एक्सेसिव यूरिनेशन है। इसके साइंस में ड्राई स्किन है, माउथ है, और इसका यूरिन का कलर चेंज होगा, वॉल्यूम चेंज होगा, वॉल्यूम लो होगा। इन फ्लूइड रिटेंशन और डिहाइड्रेशन, इनका कंपैरिजन बेसिकली डिहाइड्रेशन में वेट लॉस है एंड फ्लूइड रिटेंशन में वेट गेन है। इन डिहाइड्रेशन में यूरिन आउटपुट रिड्यूस हो जाता है। इन फ्लूइड रिटेंशन में इंक्रीज यूरिन आउटपुट। इन डिहाइड्रेशन में बेसिकली अगर इसमें फ्लूइड रिटेंशन की बात करें, इसमें एडिमा एंड असाइटिस, बेसिकली असाइटिस में एब्डोमिनल फ्लूइड रिटेंशन होगी। Different biochemical markers that are used in dehydration, basically different biochemical markers यूज होते हैं इन डिहाइड्रेशन में, जिसमें यूरिन कलर और स्पेसिफिक यूरिन ग्रेविटी, एलिवेटेड लेवल ऑफ प्लाज्मा सोडियम, यूरिया, क्रिएटिनिन रेशियो। फिजिकल और क्लिनिकल एग्जामिनेशन बेसिकली असेसमेंट मेथड्स हैं जिसमें इंटरप्रेट करते हैं फिजिकल साइंस ऑफ मैल न्यूट्रिशन। समटाइम फिजिकल साइंस आर नॉन स्पेसिफिक और अनरिलेटेड टू न्यूट्रिशन है। इन केस अगर क्रैक लिप्स है, दैट इज कॉज्ड बाय विटामिन बी complex deficiency, and it is also caused by sunburn